In the parts of speech, I have discussed the noun, the pronoun, the adjective, the verb, and now it is the adverb. Is the name indicates it is a plus one. So, or which adds something to the meaning of what is called an adverb. A word which qualifies a verb, an adjective, or another adverb is called adverb. For example, I say he writes quickly, he writes in a better way, he gets up early in the morning, I do my work in the city, I have been studying here since 2020, are some of the examples of the adverbs. Then adverb serves many purposes. अब एडवर्ब सिर्फ ये नहीं कि ये वर्ब के मीनिंग को कोई चीज़ ऐड करता है. अब एडवर्ब जो है इट आल्सो मॉडिफाई सम प्रेजेस, कुछ प्रेजेस को भी मॉडिफाई करता है. फॉर एग्जांपल, ही इज सिटिंग क्लोज टू मी, ही वाज ड्रेस्ड ऑल इन ब्लैक, and have you been all through the book. So here in these three sentences, he is sitting close to me, he was just all in a break, and have you been all through his book. इसमें close और ये all जो है ये मीनिंग को मॉडिफाई करता है. इसी तरह एडवर्ब एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस, एडवर्ब को जब हम सेंटेंस के बिगनिंग में लगा लेते हैं तो इट आल्सो मॉडिफाई और मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस का बिल्कुल मीनिंग या स्ट्रक्चर चेंज करता है. हम कहते हैं कि प्रोबेबली ही इज़ मिसलेड, इट इज़ पॉसिबल दैट ही हैज़ बीन मिसलेड और ही हैज़ बीन टेकन टू मिसकंसेप्शन, तो उसको मिसलीड किया गया है. हम कहते हैं अनफॉर्चुनेटली ही फेल्ड द एग्जाम. नो, अनफॉर्चुनेटली and probably are some of the examples of adverb that modifies the meaning of the sentence. Fortunately, he had a better chance. Evidently, the statement is false. अब मैं कहता हूँ कि evidently the statement is false, so it further testifies the falsity or the falseness of the statement. अब एडवर्ब के कुछ काइंड्स है. एडवर्ब ऑफ टाइम है, प्लेस है, मैनर है, फ्रीक्वेंसी है, डिग्री है, एडवर्ब ऑफ निगेशन है, एट्सेट्रा. तो एडवर्ब ऑफ टाइम जो है इट शोज द टाइम, टॉकिंग अबाउट द ईयर्स, morning, evening, noon, afternoon, 2020, before, already, now, lately, late, never, daily, etc. are some of the examples of the adverb of time. For example, I told him early today. अब early को ले ले तो भी एडवर्ब है, टुडे को ले ले तो भी एडवर्ब है. सिमिलरली, टाइम वंस गॉन कैन नेवर बी रिकॉर्ड, तो इसमें नेवर जो है ना, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम. सिमिलरली, ही हर्ड हिमसेल्फ यस्टरडे. आई हैव बीन रीडिंग इन दिस इंस्टीट्यूट सिंस 2015, तो इज अनदर एग्जांपल ऑफ द adverb of time. Yeah, what have you been doing over here since midnight? तो midnight की आप बात करते हैं, ईयर को मेंशन करते हैं, तो ये है adverb of time. अब adverb of place है, तो इन adverb of place it shows place, और place it is not her but it is here. It is the adverb of place. It is here.
Then there, in, out, city, and away are some of the examples of adverb of place. For example, I say go there or come here, or he went to the college to see him, or he went to the college, or he went to the airport to see his friend off. So the Prime Minister is out of the country. The animal galloped away. Now the away and out and city in etc. are some of the examples of adverb of place. Then the adverb of manner. Adverb of manner जो है normally it ends with ly के साथ quickly, fastly, slowly, fortunately, unfortunately, clearly, visibly. Some other examples where it ends in ly. Some examples of the adverb of manner: he works slowly, the child talks clearly, the book is well written, the student works hard. In the last two sentences, the book is well written. Well is the example of adverb of manner, and the student works hard. तो जो तालिब इल्म सख्त मेहनत करता है या ये किताब अच्छी तरह लिखी गई है, तो दे आर आल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ द एडवर्ब ऑफ मैनर. अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. नॉर्मली इन फिजिक्स हम कहते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड और यूनिट टाइम, बट इन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इट शोज द एक्शन हाउ ऑफन, कि हाउ ऑफन एन एक्शन takes place and what does adverb do to the verb. Examples: once है, twice है, thrice है, often है, occasionally है, seldom है, again है, always है, etc. Some of the examples of the adverb of frequency. He often comes late. Now look at late. Similarly, she always speaks to. एक बात को यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि he often comes late इसका नेगेटिव होगा he does not come late, या he never comes late इसका नेगेटिव होगा he never comes late. इसी तरह she always speak to, तो इसका नेगेटिव होगा कि she never speaks to. I visited Saudi Arabia 5 times. Now 5 times is adverb of frequency, and they met him again. So late, always, 5 times, once, twice, thrice, again, etc. Some of the examples of the adverb of frequency. इसके अलावा जो adverb of degree है, अब जो adverb of degree है, it shows how much. सिर्फ how much को जाहिर नहीं करता है. It shows how much. It shows to what extent, and it shows in what degree. अब examples इसकी है: to है, any है, quite है, very है, altogether है, and purely है. For example, मैं कहता हूँ कि he is too weak to walk. He is too rich to beg. And do you have any book? And he is quite well in English. He is very intelligent, or he shows great intelligence in the class. Altogether, this is altogether a different matter or different issue, and purely, he is purely interested in mathematics. Now, another one is the adverb of
affirmation and negation. Adverb of affirmation and negation जो है is another example of the adverb. मिसाल के तौर पे I don't know this person, और आप इसको निगेट करते हैं कि इस आदमी को मैं नहीं जानता हूँ। यहाँ पे आप एफर्मेशन फर्स्ट सेंटेंस में आप निगेशन करते हैं, सेकंड में आप एफर्मेशन करते हैं। फर्स्ट में आप निगेशन करते हैं कि आई डोंट नो दिस पर्सन, मैं इस शख्स को नहीं जानता। सेकंड में आप कहते हैं कि श्योर यू आर राइट, कि यकीनन आप ठीक है या आप ठीक कहते हैं। तो सेकंड में आप एफर्मेशन शो करते हैं। इसके अलावा एडवर्ब ऑफ रीजन जो है, एडवर्ब ऑफ रीजन जो है अनदर टाइप ऑफ दी एडवर्ब। रीजन में हेंस है, देयरफॉर है, एटसेट्रा। हम कहते हैं कि शी इज हेंस अनेबल टू अटेंड कॉलेज। सिमिलरली, as he was living away from the college, therefore he left the city. So therefore he left the city and she is hence unable to attend the college, are some of the examples of the adverb. Thank you for listening.